The IPL fever is back, and the 17th edition of the Indian Premier League kickstarts from the 22nd of March 2024. We are back as well with each and every team's squad preview, starting with the Royals from Rajasthan. I have a couple of super Royals in front of me as well, as you can see, wearing the jerseys. Welcome to the show once again, Jaideep and Sanchit. How are you looking forward to the 2024 season as a Royal? As RR fans, we hope to have a better season than what it was last season. But all spirits high at the start of the season. Yeah, and I must tell you, all the RR fans have that thing. That on paper, you guys are very strong. It's just what you provide in the tournament over the next 2 months. We start proceedings with the buys in the IPL auction. This is what you have done in the auction table. Very limited amount of purse you had, very limited amount of players you had to buy. Gone with very clear mindset of buying Robman Powell, TKC, then you have Nanki Berger, Abid Mustaq, and Shubham Dube. As an overall, I must tell you, I'll come to Jaideep first. Is Robman Powell the right replacement, I could say, for Jason Holder for the Rajasthan Royals? Robman. It's not a replacement for Jason Holder. Rather, it's to expand or give a bit more strength to the batting lineup because देवदत्त पडिक्कल का ट्रेड हो चुका है. देवदत्त पडिक्कल के जाने के बाद संजू सैमसन को उनकी फेवरेट पोजीशन मिलेगी, जहां पर अभी उन्होंने साउथ अफ्रीका में रिसेंटली 100 भी स्कोर किया, तो वो उनकी फेवरेट पोजीशन है. वहां उनको खेलने का मौका मिलेगा. हमारे डोमेस्टिक बीस जो हमारे पास है, रियान पराग, उनको 4 नंबर पर खेलना पसंद है. बहुत सारे रन बनाए उन्होंने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में 4 नंबर पर खेलते हुए, तो उनको फाइनली 4 नंबर पर खेलने का मौका मिलेगा. उसके बाद आपको शिमरन हेटमायर दिखेंगे, उनके साथ में आपको रोबमन पॉवल दिखेंगे. तो टॉप 6 यहाँ पर आपको बहुत बैलेंस नजर आएंगे. स्टार्टिंग में 2 अटैकिंग स्टार्ट देने वाले, बीच में 2 इनिंग्स को आगे बढ़ाने वाले, फिर आपके 2 फिनिशर, द वेस्ट इंडियन फायर पावर विच यू नीड इन एवरी आईपीएल टीम एंड एवरी आईपीएल फ्रेंचाइजी. तो वहां पर 6 बहुत अच्छे बैट्समैन आपको नजर आ रहे हैं. इस वजह से रोबमन पॉवल का एडिशन बहुत बढ़िया है. तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि काफी अच्छी पिक है. राजस्थान रॉयल्स ने काफी सोच समझ के उनको ऐड किया. तो Okay, and coming to Sanchit for you, Nandre Berger, against India in the Test series, he had a remarkable Test series over there against India, and also was exception for the Joburg Super Giants as well. I think in the Test series versus India was the reason behind you have picked somebody like an Nandre Berger. I think is he a potential backup of Trent Bolt? Well, yeah, definitely. I think firstly, before I come to Nandre Berger, I would like to agree to what Jaideep has mentioned about Robman Powell, and not just about Powell, because every buy that we did this season was to rectify the mistakes of what we had the last 2 seasons, to be honest. Okay. Because अगर देखा जाए 2022 और 2023 में, we had a great 11, but one injury to one of the star players in that 11, and suddenly we had no idea what to do. So, and last 2022 में उतना कुछ issue नहीं हुआ, but 23 में when we had a loss of form for someone like a Butler at the top, or even in the middle order जब finishing नहीं हो पा रही थी, so that is where we were exposed, and that caused to our non-qualification towards the end of the season. So this year, Powell, Shubham Dube, and even Berger for that matter, I would not regard Berger as a potential backup, because in my personal 11, I have him as an impact player, because I feel someone like an Andre Berger is going to be so crucial, especially while defending a target. And with his left arm pace and him getting the ball swinging in, I think he'll be a really great player to watch out for along with Bolt. So in my team, which I'll be discussing later in the show, I will go with overseas players, and the fourth one will be an impact player. So Berger definitely, maybe in a swinging ground like a Wankhede Stadium on the 1st of April, we'll see him swinging with Trent balls, because that will be a deadly new ball combination. Absolutely, 2 lefties as well with the new balls. I must tell you, these are the 5 buys you have said, and I think as a whole, Rajasthan Royals has done a decent job in the auction. They had a little bit of homework, but they have done it pretty well, I must tell you. Rajasthan Royals captain once again, leading for the 3rd season running, is Sanju Samson. Sanchit, once again, do you think any additional pressure he must have going into the new season because of not getting picked regularly in the international circuit? Well, I think the pressure is always there when you're captaining an IPL side. And for someone like a Sanju Samson, it has always been at its peak because of his record with the Indian team. He's I think one of the few IPL captains who is trying to break into the Indian team as a starter. Otherwise, the other captains they have already established themselves in the Indian 11, I would say. And for someone like a Sanju Samson, I think has a great year so far in 2023. He 2023-2024, he had a tremendous end to the South Africa series, scoring 100 in the ODI. So all spirits are high. But someone like a Sanju Samson,
But from captaincy point of view, yes, the pressure will be there, especially after knowing what happened last season. We started off well in the first 7 matches, and then suddenly losing all those crunch matches, losing on the last ball, no balls. Somewhere you feel that the captaincy has to take some kind of criticism for those changes. So I think knowing Sanju Samson, he knows that he's going to be under pressure, but that is where we know Sanju the best. He always thrives well when he's put down by pressure and everything. But so this season, I think he's going to have a great captaincy. But more than captaincy, I want to see Sanju Samson, the batter, shine more. So this season, hopefully, this season, I think, as Jaideep mentioned, that he's going to bat in his favorite position at number 3. You definitely want to see fireworks from Sanju bat. He's a calm head, I must tell you, behind the stumps when it comes to wicket keeping as a captain as well. He has the management who backs him as well. So, do you think Sanju Samson, the beast, as Sanchit mentioned, batting in his favorite position, as you mentioned, will come out well this season? He's a calm head, I must tell you. यू नो 3 नंबर पर जब कोई बैट्समैन खेल रहा होता है, चाहे आप बड़े बड़े प्लेयर्स की बात कर लीजिए, 3 नंबर पर विराट कोहली जैसे ग्रेट बैट्समैन खेल चुके हैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, तो 3 नंबर एक बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है, एज वेल एज 3 नंबर संजू सैमसन की फेवरेट पोजीशन भी है। और इस पोजीशन पर खेलते हुए संजू सैमसन ने बहुत सारे रन स्कोर किए, चाहे वो राजस्थान रॉयल्स के लिए हो। हालांकि टीम इंडिया के लिए उतने चांसेस नहीं मिले इनको इस पोजीशन पर स्पेशली, बट जब भी चांस मिला है संजू सैमसन इस पोजीशन पर जब भी खेले उन्होंने फायर ही किया है। वेल इज 3 नंबर संजू सैमसन की अच्छा अटैक हमको देखने को मिल सकता है, बट थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा संजू के गेम के बारे में बात करूं तो काफी अटैकिंग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, बट कभी कभी सिचुएशन आपको अलाउ नहीं करती उस तरह से अटैक करना। कभी कभी मुश्किल पोजीशंस में होता है मैच, कभी कभी आपको थोड़ा सा क्रीज पे टाइम बिताने की जरूरत भी होती है, और थोड़ा सा उस चीज में संजू सैमसन हमको थोड़े से लैक करते हुए नजर आते हैं। बट कभी कभी सिचुएशन तो मेरी यही उम्मीद रहेगी कि संजू सैमसन जितनी भी कमियां रही है उनकी, एस संजित भाई मेंशन कि 2022 में तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी, बट 2023 में जब हम एक्सपोज होने शुरू हुए तो बहुत सारी कमियां हमको देखने को मिली। तो उन सब कमियों से ऊपर उठे, ऊपर उठाएं टीम को, क्योंकि कैप्टन है तो टीम को साथ में लेके चलने का काम है उनका। खुद अपनी बैटिंग में जो उनको कमियां नजर आई हैं, जो छोटी मोटी गलतियां करते हैं, गलत शॉट मार के आउट हो जाना, वो सबसे दूर रहे। तो संजू सैमसन से हम 400 450 का सीजन एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर बहुत अच्छा करें तो शायद 500 रन भी बना दें, क्योंकि फेवरेट पोजीशन पे खेल रहे हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो टीम बहुत आगे जाने वाली है। Okay, so both of you are pretty much confident on your captain. That's very good to see, I must tell you, because he is a very good player. And Sanju Samson, the batter, is very strong. He's, as we have seen last year as well against the Gujarat Giants, he turned the game on its head at Ahmedabad against the. Similarly, the wicket keeper, very calm head, loves similar to back his bowlers as well in death conditions, or as well in the top of the order. Very attacking as well, attacking minded captain. I've seen him very much. I can literally say a little bit of Dhoni mastermind comes into Sanju Samson, but I will not take that credit away from what Dhoni has been over the years. But yes, good enough to lead once again for the Rajasthan Royals. Yes, we begin with the squad, and the first 4 are the top order batsmen: Sanju Samson, Josh Butler, Yashasvi Jaiswal, and Kunal Singh Rathore. I'll start with the future of Indian cricket. Sanchit, start off with Yashasvi Jaiswal, please. We begin with the squad, and What a year he has had! Not just year. I think the last 2 or 3 years, he's not only been the poster boy of Rajasthan Royals, but now slowly turning into the poster boy of Indian cricket, which is such a yeah, big thing. I mean, for RR fans, I would say, I think Jaideep will agree with me. When was the last time we had a star in the RR team, to be very honest, an Indian cricket team star? So Jaiswal is a gem, not just for Rajasthan Royals, but the whole of Indian cricket, I would say. And definitely, he would be loving to carry on his form from 2023 to 2024, and even better himself at certain situations. So Jaiswal definitely is in the form of his life, and he's just getting started. And who better than the Josh the Boss to have him at the other end to keep himself absolutely. calm. So Jaiswal definitely certain situation, because I remember him mentioning the fact that having someone like a Josh Butler at the other end gives him that confidence to attack any kind of bowling at certain situation. That is why we saw last year also Butler playing a very different role than what he used to play earlier for Rajasthan Royals. He always used to take his time into the innings, while Jaiswal used to go bang bang, and then when Jaiswal gets out, then that is the time when he used to carry it on to his beginning. So that is where I feel that RR will continue with the top order. And that is why we saw last year also Butler, and they will continue to have an amazing start. Sanju Samson at 3, definitely I want to see a 500 plus runs, as Jaideep Bhai mentioned. I think he hasn't scored a 500 plus runs ever in the IPL, I think. So this can be like the biggest
turnaround for him as an Indian cricketer aspiration also. But Kunal Singh Rathore is someone I really want to see. I'm not sure कि अभी मतलब कितना देखने को मिलेगा in this IPL, but he has had a tremendous year as a domestic cricketer as well. He has been really doing well behind the stumps as well. But Kunal Singh Rathore, I'm not really sure about how many games he will play. But if again Riyan Parag experiment doesn't work, then we can see Kunal Singh Rathore in that middle order at some point of time. So I'm not really sure, but I personally want Parag to play all the matches at first. Okay, so you pretty much described all the four players pretty well. But I Expect Sanju Samson and Josh Butler to be the anchor players, to be very yeah, honest, with Yashasvi thriving from the other end. But Kunal Singh Rathore, for Rajasthan, he has been terrific in the domestic circuit, so I think he can get some game time only if there is, fingers crossed, no injury concerns, or if Rajasthan qualify for the playoffs early on in the innings, and then we might see that. But Kunal Singh Rathore, Jaideep, coming to you, same question as a whole, if you want to give any inputs about these four players. कि अगर आप टॉप 4 उठा के देखें स्पेसिफिकली, अगर आप टॉप 3 देखें तो शायद से ये जबरदस्त बैटिंग लाइनअप नजर आती है। टॉप 6 बहुत अच्छे बट टॉप 3 उनसे भी अच्छे। शायद से ये एक बहुत खतरनाक स्टार्ट देने वाले प्लेयर्स हैं। पूरे आईपीएल में आप टॉप 3 देखेंगे, काफी अच्छे अच्छे टॉप 3 आपको नजर आएंगे, बट ये वाला जो टॉप 3 है कि अगर आप टॉप 4 उठा के देखें, संचित भाई ने मेंशन किया कि यशस्वी जायसवाल का जिस तरह का साल गया है, आईपीएल में भी हम उनसे वही फायर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वाली फायर जो पिछले साल उन्होंने जलाई थी, बस उसको कंटिन्यू रखे इस आईपीएल में भी, आने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन में भी। बट इस साल खासकर वो आग हमको देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि शायद ये आखिरी साल हो सकता है मेगा ऑक्शन से पहले का। तो उसके बाद क्या हो जाए हम कह नहीं सकते। तो इस बार हम चाहेंगे कि यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, संजू सैमसन तीनों उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएं जो जिम्मेदारी उनको दी गई है, टीम को अच्छा स्टार्ट देने की। संचित भाई ने मेंशन किया कि यशस्वी जायसवाल का जिस तरह का साल गया है, काफी हद तक एग्री करूंगा इस बात से भी कि यशस्वी जायसवाल is going to be the player who will be playing all those attacking shots in the beginning, और जॉर्ज बटलर और संजू सैमसन थोड़ा सा इनिंग को एंकर करने की तरफ फोकस करेंगे। जॉर्ज वो फायर, वो अटैक, वो सब चीजें कंटिन्यू रहने वाली है, और एक अच्छा सीजन राजस्थान रॉयल्स के लिए जाने वाला बिल्कुल, बहुत बढ़िया. Thank you so much, Jaideep, for this one as well. है। वो फायर The four players here: Tom Collicardmore, you have Shivam Dube, you have a Dhruv Jurel, and you have a Ryan Parag. I'll once again start with Sanchit. The four players, two Indians you have this side with Dhruv and Ryan Parag. You start with whatever, but describe the four players for me. yeah, definitely. I think I'll begin with Dhruv Jurel and Riyan Parag because I consider both of them to be playing an important role in the starting 11, to be very honest, because Dhruv, with the season that he's had last year and the way that he's carried that in the domestic, and now for Indian cricket team, this is like a golden time living as an RR Yep. fan, as an Indian cricket team fan, to be very honest. So I'm expecting the same from Dhruv Jurel. The best part about Dhruv is that he can play in any kind of a role in that middle order, whether if you want him as an anchor in the middle order, whether you want him as a finisher, and he's done that well. We have seen that in the last season as well. So that is a great asset to have in any side. So if you look at our batting lineup, ऐसे भी मतलब conversation होते हैं कि you can't even fit Dhruv Jurel in the lineup because you have someone like a Powell and Hetmeyer. Yep. So that is somewhere I feel it's a good problem to have, because if you look at our batting, the impact player rule, you can even strengthen your batting order. And as I mentioned, impact player rule, जो बाकी के दो नाम हैं, Tom Collicardmore and Shivam Dube, these can be really good candidates for that role, especially Tom Collicardmore, because we have seen him in the other franchise league as well, and he really can give you those quality starts at the top of the order. Let's say, I mean, I'm not saying कि ऐसे होना चाहिए, but if something happens to someone like a Josh Butler, we don't need to worry about it because Tom Collicardmore can equally give you those starts at the top of the order, and that is the luxury we have as our backup. And lastly, talking about Riyan Parag, I want him to have a wonderful season. जैसे जयदीप भाई ने कहा, with DDP going the other way, नंबर 4 का जो स्पॉट है, इट इज नाउ कंप्लीटली रियान पराग्स, एंड ऐसे Yep. बोला भी गया है कितने एक्सपर्ट्स ने कि दैट इज हिज आइडियल पोजीशन. व्हाई इज आरआर प्लेइंग इन एज अ फिनिशर? दैट इज नॉट हिज रोल. ही बैट्स एट 4 फॉर Assam as well, and he's done well in domestic circuit. So now giving Riyan Parag the number 4 position after 5 years at the team, I think this is the perfect time, perfect season for Parag to finally arrive into the IPL cricket. Really expecting Riyan Parag to do well at 4. Yeah, a domestic season he had this season was remarkable, and I average of over 70, I guess. So he hasn't striked that well in the IPL circuit, and I think Devdutt Padikkal
making that trade could be a blessing in disguise, where you have Sanju Samson batting at 3, you can have a Riyan Parag at 4. Dhruv Jurel, he has been exceptional for India with the gloves, I must tell you firstly, and also with the bat. So, and year two, remember for him as well, just like you mentioned before for Yashasvi Jaiswal. Shubham Dubey, a very good player in the domestic circuit as well. Very good strike rate, I must tell you. 145 in the T20 circuit is a very good strike rate. Destructive middle orders, and that is Shimron Hetmeyer, Rovman Powell, Devon Ferreira, and Ravichandran Ashwin, the all-rounder. I'll come to Jaideep, who is very much excited to talk about the two West Indians. Start with this one, Jaideep, please. बहुत जबरदस्त बैटिंग लाइनअप बना देते हैं ये दोनों प्लेयर्स, हेटमायर और रोमन पॉवल, क्योंकि फिनिशर्स होने बहुत जरूरी है वहां पे, क्योंकि ये उस लेवल की लीग बन चुकी है कि अगर आपके पास फिनिशर्स नहीं है 5-6 नंबर वाली पोजीशन पे, तो शायद आप थोड़ा सा दूसरी फ्रेंचाइजी से पीछे रह जाएंगे, क्योंकि उस तरह के आपको फिनिशेस देखने को नहीं मिलेंगे जिस तरह से दूसरी टीम्स फिनिश करते आई। और हमारी जो टीम मैनेजमेंट है उन्होंने वेस्ट इंडियन मसाला ऐड किया, एक नहीं दो दो वेस्ट इंडियन फिनिशर्स हमको मिले। और यहाँ पर आपको शिमरन एटमायर नंबर 5 पर, रोबन पॉवल नंबर 6 पर खेलते हुए नजर आएंगे, विच मेक्स द बैटिंग लाइनअप एब्सोल्युटली डेडली। क्योंकि भाई ने मेंशन किया कि ध्रुव जुरेल भी आपको उस पोजीशन पे नजर आ सकते हैं अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ हो जाता है कभी, मिनी कलैप्स वगैरह, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, अगर कुछ हो जाता है तो ध्रुव जुरेल भी उस पोजीशन पर खेल सकते हैं जिस पोजीशन पर उन्होंने लास्ट टाइम भी कारनामा करके दिखाया कि इस पोजीशन पर वो खेल सकते हैं और रन्स भी ऐड कर सकते हैं टीम के लिए। जब मैं बैकअप्स की बात करूं तो मेरे को डोनोवन परेरिया भी वहां पर नजर आते हैं, जिनका साउथ अफ्रीका के लिए T20 डेब्यू बहुत अच्छा गया था। हालांकि उसके बाद थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, बट डेब्यू काफी अच्छा था उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में। और इनके भी नंबर्स काफी अच्छे हैं, जब आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट की बात करते हैं काफी अच्छा एवरेज, डिसेंट एवरेज नजर आएगा, स्ट्राइक रेट काफी अच्छी है इनकी। तो डोनोवन परेरिया भी अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो हमारे पास एक काफी अच्छा बैकअप है डोनोवन परेरिया के रूप में। तो ओवरऑल काफी अच्छी बैटिंग लाइनअप नजर आ रही है इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग 11। और आप बैकअप्स पे भी नजर डालें तो बैकअप्स भी काफी अच्छे। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन मुझे स्लाइड में नजर आ रहे हैं। किस टीम में रविचंद्रन अश्विन इंपॉर्टेंट नहीं? हर टीम में, दुनिया की किसी भी क्रिकेट टीम में रविचंद्रन अश्विन की इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी राजस्थान रॉयल्स में या फिर इंडियन क्रिकेट टीम में, क्योंकि उस तरह का माइंडसेट लेके आते हैं कि उस तरह की कैपेबिलिटी, उस तरह का स्पिन में जाल बुनने वाली जो टेक्निक है वो लेके आते हैं। तो रविचंद्रन अश्विन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है किसी भी टीम के लिए। और साथ में इनकी जो बैटिंग का तड़का एक टीम को मिलता है, 2022 में हमने देखा कि काफी बार मैनेजमेंट ने इन्हें प्रमोट किया। हालांकि मैं नहीं चाहूंगा कि इनको प्रमोट करने की नौबत आए, बट फिर भी अगर इनकी बैटिंग में जरूरत पड़ती है तो ये बैट से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट 4 प्लेयर्स हैं ये, और मेरी पूरी उम्मीद है कि अच्छा करेंगे। ओके, तो बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच जयदीप, आपने तो पूरा चारों प्लेयर्स अच्छे से बता दिया। आई थिंक डेवन फरेरा कुड बी अ वेरी गुड impact player, just like Sanchit mentioned before, of the likes of Robman Powell, Shimron Hetmeyer, they're all finishers. Devon Ferreira had a wonderful season for in the SA T20 as well for the Joburg Super Giants. Then you have Robman Powell, currently T20 captain of the West Indian team as well. Shimron Hetmeyer, no introduction, destructive with a left-handed batsman, plays spin so well. And in that order, I think he's the only left-handed batsman Rajasthan Royals have after Yashasvi Jaiswal. It's very important to stay down the order, deep into the innings as well. And then you have the mastermind Ravichandran Ashwin. So as a whole, the all-rounder section as well looks pretty much sorted for the Rajasthan Royals. We are going on to the bowlers now. The two leggies, Yuzvendra Chahal and Adam Zampa. Then going to the traded player Avesh Khan, who has been traded in place of Devdutt Padikkal, and then Trent Bolt, the swing king. Sanchit, to you, firstly start with the two spinners and then to the two pacers. Yeah, definitely. I think this year, अगर देखा जाए, not just this year, for the last 3 years, the biggest strength of Rajasthan Royals has been the spinners. Because Yeah. if you compare all the squads in the IPL, having Ravichandran Ashwin, having Yuzvendra Chahal, having Adam Zampa, three of the greatest spinners in international cricket right now in the same team, it is such a luxury to have. And we saw that at Chepauk last year when RR beat CSK in their own den. These three ran the show with their spin magic, and that is what I'm expecting this season as well. I feel somewhere Yuzi and Ashwin both complement together each other. एक अकेला कोई मतलब ऐसे dominate नहीं कर पाता without the support of others. So these two work well in partnership. That has been the strength of Rajasthan Royals for the last 3 years. And having someone like an Adam Zampa in the mix, it is such a luxury to have. Just imagine once again on a pitch like Chepauk or even Ekana for that matter, if you're defending a target and there is no dew around, you can just unleash these three spinners out, Yep. and this is going to, it could be as good as the prime CSK team of the past when they used to just
choke the opposition with the spin troubles, and this is such a luxury to have. So spinners के हिसाब से I think we have been really blessed to have such amazing option. And as far as the pacers are concerned, yes, Avesh Khan is a very debatable pick because of his prize money, of course. But I feel that in mini auctions, especially when trades are happening, कोई compromise नहीं रहता. Yes. So I am personally on the fence between the Avesh Khan move, but judging by how many quality Indian options we had in the auction for that matter, I'm still fine with it because Avesh, as we know, that he has a very good Yorker. So if he Yeah. can just find ways to be consistent, especially in the power play and death overs, then he can be really a vital threat. And especially knowing that someone like a Prasidh Krishna who is thoda sa rusty after coming back from the injury, this will ease pressure off him also. So पिछली बार वही डर था कि यार अगर प्रसिद्ध नहीं चलेगा तो then who is going to be the pacer to step up for Rajasthan. But now we have Avesh Khan, we have Prasidh Krishna, and also Kuldeep Sen, who had a wonderful 2022 IPL. 23 missed out on few games due to injury. And Trent Bolt, यार उसका तो कोई introduction चाहिए ही नहीं यार. He is going to give his magic in the power play. So having him ball with his left arm swing is going to be an amazing thing. So hopefully Bolt can manage to be consistent the way he has been for the last 2 years and get those crucial wickets. So with the bowling this slide, I think I'm pretty much happy. Just want the consistency from our pacers. Okay, so pretty much sorted. Once again, I think Avesh Khan, I agree with one point with you. Avesh Khan has a great Yorker, and I think he could be that death bowler for Rajasthan Royals because Trent Bolt, he can be that bowler which, like always, Mahendra Singh Dhoni uses the Deepak Chad in 3 overs in the power play. Trent Bolt can be that bowler. You can, if he's getting that swing, he can be that deadly. Give him 3 overs in the power play. Don't think of him as a dead bowler. You can have an Avesh Khan. You can go for a Sandeep Sharma. I know, I remember the game versus CSK last season. So what he did that game as well. The two spinners, Adam Zampa, international for Australia. I think he's top class. Yuzvendra Chahal not getting game time just because of Ravi Bishnoi for India, but he's that good and that skillful. And I think last year, what I like the most is that RR is using him as late as possible in the innings, so he's that good as well. So these combination I pretty much like about these four bowlers, and is the remaining four Indian pacers, that is Prasidh Krishna, Sandeep Sharma, Navdeep Saini, Kuldeep Sen. Jaideep, I'll come to you. So many pacers you have and so many Indian pacers you have. The bowling attack looks sorted, I must tell you. या डेफिनेटली इतने सारे पेसर्स अगर किसी टीम में आपको नजर आए और ना केवल इतने सारे नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी क्योंकि आप जब यहाँ पर नाम देखेंगे प्रसिद्ध कृष्णा ओडीआई टीम में लगभग आप कह सकते हैं कि अपनी जगह पक्की कर चुके हैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए संदीप शर्मा अगर आप आईपीएल में इनके नंबर्स उठा के देखें बुमराह के आसपास के नंबर्स हैं इनके जब आप नंबर्स की बात करते हैं तो संदीप शर्मा उस लेवल के बॉलर है नवदीप सैनी इतना चांस इनको मिला नहीं है राजस्थान रॉयल्स के लिए बट आई नेवर डाउटेड हिज स्किल्स और आई एम श्योर अगर इनको चांस मिलेगा तो ये अपने स्किल्स को प्रूव करके भी दिखाएंगे और कुलदीप सेन को भी कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं क्योंकि जिस तरह से इन्होंने 2022 में परफॉर्म किया था आई रिमेम्बर अ गेम अगेंस्ट एलएसजी जहां पर आखिरी ओवर में 10 रन डिफेंड करने थे मार्कस स्टोइनिस वाज ऑन द स्ट्राइक और इन्होंने इनका डेब्यू मैच था आई गेस वो और इन्होंने वो काम सक्सेसफुली करके दिखाया तो दैट शोज the level of mindset, the level of skills that Kuldeep Sen has. तो काफी अच्छा आपको बॉलिंग लाइनअप नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे अगर आप इनके साथ स्टार्ट करते हैं और आप इम्पैक्ट प्लेयर में फास्ट बॉलर को अंदर लाना चाहते हैं तो स्विंगिंग कंडीशंस में आप संदीप शर्मा को अंदर लेके आ सकते हैं क्योंकि उनकी बॉल जब मूव करती है तो अच्छे अच्छे ट्रबल में आ जाते हैं हमने देखा है तो संदीप शर्मा स्विंगिंग कंडीशंस में एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं अगर पेस बाउंस को सपोर्ट कर रहे हैं पिचेस जैसे कि आप वानखेड़े पिच की बात करें तो वहां पर आपको कुलदीप सेन देखने को मिल सकते हैं नवदीप सैनी देखने को मिल सकते हैं एज एन इम्पैक्ट प्लेयर तो एक्सपेक्टेशंस यही रहेंगी कि अच्छा परफॉर्म करें और जिस तरह से इनके नाम है जिस तरह से इनके नंबर्स हैं वो राजस्थान रॉयल्स के लिए भी जारी रहे राजस्थान रॉयल्स के लिए भी वही परफॉर्मेंसेज कंटिन्यू रहे और टीम की जीत में कंट्रीब्यूट करें बिल्कुल और जैसे आपने उनको फिगर्स भी बताया उनका इकोनॉमी थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन यू कैन आल्सो सी दैट दीस फोर bowlers for India as well have been bowling in the death for Rajasthan Royals. So at the death you will definitely go for runs some of the times. But Kuldeep Sen, you've said Sandeep Sharma has been bowling well in the death. Prasidh Krishna has international experience as well. After injury has been a bit off, but you may never know. Good players take just one game and they get back to their sharpness. So yes, I agree with this four players as well. Sanchit, as in a short way, if you can explain Andre Berger and Abid Mushtaq, what expectations do you have from them this season? Well, really good squad depth to have, but really happy with Abid Mushtaq as well. I remember on social media how happy cricket fans were from all over the country
when we got this talent, and really expecting him to grow well under the franchise, working with the best, and having someone like a Shane Bond as your fast bowling coach. This can be like a big thing for any cricketer, to be very honest. So really good to have him in the squad. I'm not sure about how many game time he will get, because जैसे Yes. जयदीप भाई ने यार मतलब पेसर की पूरी फैक्ट्री भर गई है in this team. So I'm not sure about that. But with Burger, as I said earlier, I think I expect him to be one of the impact players, at least in few matches where you get initial swing. So really happy with this, and really hoping that Nande Burger can deliver what he's been doing for South Africa. Absolutely, you said, and he's a young blood. We can expect a lot of good things from him, and I hope he gets game time. I hope that he can be that impact player when it comes to defending scores, which you have been expecting from an overseas Sanchit. So let's see. This sums up the squad. The SWOT analysis I have done, to be honest, for the Rajasthan Royals, couldn't find many weakness, to be honest. But as a whole, 1 point each. Very strong bowling unit, as Sanchit mentioned. Factory you guys have of bowlers. Then going on to the weakness, I think the two overseas finishers, Robman Powell and Shimron Hetmai, the two overseas finishers, if they do not click, it's a worry because the onus lies on Dhruv Jurel alone. Then you have the opportunity. I wish this player performs well this season. I really want Riyan Parag to come out big and prove all his critics wrong and show why he is the real talent. And then comes to the performing under pressure, as Sanchit you have mentioned before last year, that no ball, that last ball six, those minor injury time, minor things. I hope things get better this time under pressure. The team stays calm through and performs better. Well, and Jaideep, coming to you as a whole, the SWOT analysis. Do you have any inputs towards this one? I think strengths are pretty much, I can say correct, क्योंकि जो क्वालिटी हमारे पास फास्ट बॉलर्स की, अभी मैंने भी डिस्कस किया, संचित भाई ने भी ऐड किया कि जो क्वालिटी है हमारे पास फास्ट बॉलर्स की, उससे बड़ी स्ट्रेंथ आपको मिल नहीं सकती एज एन आईपीएल फ्रेंचाइजी. बट यहाँ पर मैं एक और स्ट्रेंथ जो टीम की देख रहा हूँ वो है पावर स्टार्स, क्योंकि आपके पास वहां पर यशस्वी जायसवाल है, बहुत ही अच्छे फॉर्म में है. उनके फॉर्म से कौन वाकिफ नहीं है भाई, जो भी इंडिया के मैचेस देख रहा है अभी सबको पता है यशस्वी जायसवाल किस फॉर्म में. जॉस बटलर बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं थे लास्ट सीजन, बट पाल रॉयल्स के लिए एक बार फिर से उनका सीजन काफी अच्छा गया है. मानता हूँ वो वाला कंपटीशन नहीं है, SC20 वाला कंपटीशन नहीं है ये, उससे काफी बड़ा लेवल है, काफी हाई कंपेटिटिवनेस दिखने वाली है आपको यहाँ पर फिर भी जॉर्ज बटलर जैसे प्लेयर को एक आधा मैच चाहिए क्लिक करने के लिए, और जिस तरह से उनके परफॉर्मेंसेस रहे भी हैं पाल रॉयल्स के लिए अंडर प्रेशर, तो मुझे नहीं लगता कि उनके फॉर्म के साथ कोई कंसर्न होने वाला है. और संजू सैमसन अगेन बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए हम उनको देखते आए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और जिस तरह से वो अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते रहते हैं, कंटिन्यू करते हैं रन रेट्स को, उस मोमेंटम को, विकेट जाने का प्रेशर वगैरह नहीं लेते, तो वो भी आपको अटैकिंग स्टार्ट देने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. हालांकि मेरा फिर भी मानना यही रहेगा कि संजू सैमसन थोड़ा सा रुक के खेले, थोड़ा सा एंकर करें, गलत शॉट ना मारे, क्योंकि एक बार जब संजू सेट हो जाते हैं उसके बाद वो अनस्टॉपेबल हो जाते हैं, उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो मैं यही चाहूंगा कि संजू थोड़ा टाइम ले, थोड़ा सा सेट हो जाए, उसके बाद अटैक करें. बट संजू जब अटैक जब भी करते हैं तो उस तरह का अटैक हमको देखने को मिलता है कि भाई बॉल आपको फील्डर्स को नजर नहीं आती, फिर स्पेक्टेटर्स को ही नजर आती, उनके हाथों में ही जाती. तो उस तरह की स्ट्रेंथ्स हैं संजू सैमसन के पास भी. तो वो आपको स्टार्टिंग के 3 बहुत अटैकिंग जो है रोल में दिख सकते हैं, अटैकिंग रोल प्ले करते हुए दिख सकते हैं. वीकनेस की अगर मैं आप बात करें तो यहाँ पर आपने मेंशन किया कि ओवरसीज प्लेयर्स अगर क्लिक नहीं करेंगे तो शायद एक वीकनेस अराइज हो सकती है. बट मुझे नहीं लगता, शायद मैं आरआर फैन हूँ इसलिए मेरा ऐसा मानना हो, शायद मैं गलत भी हूँ, बट मेरे को ऐसा लगता है कि दो प्लेयर्स दोनों ही ना चले ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है. और खासकर जब आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो, चाहे आप शिमरन हेटमायर की बात कर लीजिए, जिस तरह का एक्सपीरियंस वो लेके आते हैं, रोमन पॉवल की बात कर लीजिए, वेस्ट इंडीज के कैप्टन है, तो काफी एक्सपीरियंस भी है. और इवन अगर ये दोनों प्लेयर नहीं भी चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहूंगा नहीं ऐसा हो, तो भी आपको वहां पर ध्रुव जुरेल नजर आएंगे जिन्होंने लास्ट टाइम ये रोल निभाया था राजस्थान रॉयल्स के लिए. शुभम दुबे 171 का स्ट्राइक रेट है उनका, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में विदर्भ के लिए खेलते हुए. तो वहां पर भी आपको काफी सारे ऑप्शंस नजर आते हैं फिनिशिंग रोल के लिए भी. अपॉर्चुनिटी प्रीटी मच एग्रीड कि रियान पराग चले, फाइनली उनको 4 नंबर की पोजीशन मिली है और मौका मिला है उनको, तो चले परफॉर्म करें. और थ्रेट आपने मेंशन किया है कि परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा था 2023 में. आई डेफिनेटली एग्री टू दैट. बट होपफुली जैसा मैंने कहा है कि ऑक्शन में गलतियों में सुधार हमको देखने को मिला. और पिछले साल की
जो 2022 में जो कमियां थी वो 2023 में एक्सपोज हो गई थी, उसके बाद आपने ऑप्शन में सुधार किया। तो मुझे लगता है कि जो 23 में जो बाकी छोटी मोटी जो गलतियां चल भी रही है, जैसे आप कह रहे हो कि परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर, ये थोड़ा सा थ्रेट है टीम के लिए, तो उसमें हमको सुधार डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ओके, सो आपने बहुत अच्छे से SWOT को डिफाइन किया एंड लेट्स होप राजस्थान परफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू व्हाट योर एक्सपेक्टेशंस इज। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, हियर आर माय फाइव प्लेयर्स, दैट इज यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, संजू सैमसन, ध्रुव जुरैल and Andre Berger. Five players to be very star players, but Sanjit, I'll come to you. Surprisingly, no Trent Bolt. You have gone with Andre Berger. No Hetmeyer. No star players amongst this mix. No Yuzvendra Chahal as well. Reason being, you have gone with these specific five players. Well, it's a very good प्रॉब्लम टू हैव। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि विद दिस स्क्वाड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पिक कि यार मतलब 5 प्लेयर से कौन किसको ऐसे करे। एवरीवन इज डूइंग वेल, बट आई वेंट विद दिस 5 प्लेयर्स बिकॉज़ आई फील दैट दे विल हैव द मैक्सिमम इम्पैक्ट। Because if you look at the star power, Yashasvi Jaiswal, no introduction needed. Josh Butler, Sanju Samson, these three are going to be the pillar of our batting in the top three, and they are going to decide at least 90% of the times कि यार matches कितने जीतने वाले हैं। So I feel players to watch out for में ये तीनों तो रहने ही चाहिए, like compared to others. And with Dhruv Jurel and Andre Berger, it is a very surprise pick according to me because I feel Dhruv Jurel with the kind of a season he's had in domestic circuit and in international circuit, for confidence it is going to spiral upwards only in this season. And with the experience and the exposure that he got in the IPL last year, he's going to only going to get better. And जैसे आपने कहा था पिछले स्लाइड में कि weakness will be Ara's finishing. I completely agree with that because Powell की जो spin game है, that will be exploited a lot by other opposition. That is where someone like a Dhruv Jurel can thrive because we have seen his spin game in the recently going ongoing India versus England matches. So somewhere Dhruv Jurel can be that X factor in that middle order, especially as a finisher. And Andre Berger, जैसे मैंने कहा earlier, he's going to be the X factor in terms of impact player, and I'm fully expecting him to go really well in partnership with someone like a Trent Bolt. Very much agreed, Sanchit. And the five players you have picked has a specific role, and they could be X factor roles because the top three, I must tell you, as the Jedi mentioned before as well, they could be one of the most destructive top three. Just like we have an RCB, we have a Mumbai Indians, but these top three have different skill sets and they play in sixes. They deal in sixes, I must tell you. So these players are really good. You have you Dhruv Jurel. I think I wish him good luck, whatever he's doing in the Indian circuit, and then also a wonderful season in the IPL. I hope so. And Andre Berger, I'm pretty much excited to see what he does in the IPL for the first time. So pretty much sums up the five players you have chosen. You still had yes, Yuzvendra Chahal, you had Shimron Etma, your Powell, which you stuck to this one. So yes, equally good. That is the team strategy and the gameplay. This is what I have studied according to what Rajasthan Royals can potentially do. Jaideep, I want you a little bit of input about this one. These are three ones I have mentioned. Firstly, it is not dependent on the toss. The team you have on paper, I think that as a whole, you can defend the target, you can chase the target. Then going to Josh Butler and Sanju Samson being the anchor role players, I think this much you must pretty much agree. And Chahal continuing to being that bowler who will bowl later in the innings. Is it true? And how much do you agree to these of the 3 points? Yeah, pretty much agree to all of them because टॉस पे डिपेंडेंसी नहीं है, ये तो हमको 2022 के सीजन में ही पता चल गया था, जहां पर हम इतने सारे टॉसेस लगातार हारे थे। और वहां पर अपोजिशन ने अपनी चॉइस की सिलेक्शन करी टॉस में, बट फिर भी मैचेस राजस्थान रॉयल्स जीत गई। तो वहां पर आपको ये चीज साफ नजर आती है कि टॉस पर उतनी ज्यादा डिपेंडेंसी है नहीं। जॉस बटलर, संजू सैमसन एंकर रोल प्ले करें, ये मैंने भी इस बात पे जो है लाइट डाली थी, संजित भाई ने भी एग्री किया था कि जॉस और संजू सैमसन अगर एंकर रोल में खेलते हैं तो वहां पर एक सीनियर प्लेयर दूसरे एंड पर आपको खड़ा हुआ नजर आएगा। चाहे अगर यशस्वी जायसवाल आउट भी हो जाते हैं या इन दोनों में से भी कोई एक आउट हो जाता है, फिर भी आपको एक सीनियर प्लेयर दूसरे एंड पे खड़ा हुआ नजर आएगा। और दूसरी तरफ से जो नया प्लेयर आता है वो अटैक कर सकते हैं। रियान पराग को हमने देखा है कि अटैकिंग गेम ही खेलते हैं वो ज्यादातर। इवन आप जब रणजी ट्रॉफी में भी उनकी बैटिंग पे नजर डालें तो काफी हद तक अटैकिंग क्रिकेट देखने को मिलता है आपको। कभी कभी 100-120 के स्ट्राइक रेट से भी आपको उनकी सेंचुरीज देखने को मिलती है इवन इन रणजी ट्रॉफी। तो उस तरह के प्लेयर है वो अटैक करना पसंद करते हैं। फिनिशर्स का तो खैर काम ही होता है अटैक करना। आप शिमरन एटमायर ले लीजिए, रोबन पॉवल ले लीजिए, और इवन अगर ध्रुव जुरेल उस पोजीशन पर खेलने आते हैं तो इफ द सिचुएशन डिमांड्स उनको अटैक करना ही पड़ेगा। तो अगर एक सीनियर प्लेयर, एक वेल सेटल्ड प्लेयर अगर आपको अदर एंड पर नजर आएगा, बीट संजू सैमसन और जॉर्ज बटलर, तो वैसे भी स्ट्रेंथ उनको मिल जाएगी कि भाई अगर एक आधा कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो वहां पर वो सीनियर प्लेयर खड़ा है, सेट बैट्समैन खड़ा है।
So pretty much agree to this point as well. और चहल ने तो जिस तरह से बॉलिंग करी है डेथ ओवर्स में, आई मीन आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग के पास एक लिबर्टी है कि हम चहल से एक स्पिनर से डेथ बॉलिंग करा सकते हैं, और उनके जिस तरह के स्किल्स है ना, आप उनको डेथ बॉलर से कम कह भी नहीं सकते, क्योंकि बैट्समैन से बॉल दूर रखना, टर्न करा के बॉल को बाहर ले जाना, बैट्समैन को डिसीव करना, बॉल देखो कि आप जब शॉट मारते हैं तो बाउंड्री पे कैच हो जाते हैं, हवा में बॉल खड़ी हो जाती है, कभी कभी आप एलबीडब्ल्यू या स्टंपिंग भी आपको देखने को मिलती है चहल की बॉलिंग में, इवन इन डेथ ओवर्स। तो हमारे पास एक लिबर्टी है कि चहल को आप डेथ बॉलिंग में यूज करके आप एक अलग ही वेरिएशन लेके आ सकते हैं, जो कि शायद फास्ट बॉलर्स ना लेके आ पाए, क्योंकि दूसरी सारी टीम्स आप जब नजर डालें तो सारे के सारे आपको जो डेथ बॉलर्स है वो फास्ट बॉलर्स ही नजर आते हैं, बट हमारे पास एक ऑप्शन है कि एक और वेरिएशन ऐड करा जाए फास्ट बॉलर्स के साथ। तो यस, कंप्लीटली एग्री टू ऑल थ्री ऑफ देम। Okay, thank you so much. Agreed with this one as well, and you explained it pretty much well. That is the 16 years of Rajasthan Royals, and where have they landed in the rankings, to be very honest. As you can see in the picture, this is not my question, to be honest. Sanchit, I'll come to you. You have been, both of you rather, have been a super Royals fan. Till the year 2014, I'll keep, or 2015, I will keep it. If you can tell me who were the captains each year for Rajasthan Royals. Uh, 2008, I think it is definitely Shane Warne. 2009 also, 2010 too. 2011, I think Dravid took over when he came to Rajasthan Royals. 12 Okay, and so 13. I'm so sorry, I will cut you. 2011 as well, Oh, Shane Warne was the captain. oh, 2012, okay. Dravid took over. So yes, you can Okay, okay. continue. Give one more shot till Yeah. 2015. Yeah, so 2013, 14, 15, I think we had multiple captains during this time. Few of the times we had someone like a Shane Watson captaining, and in his absence, we had Steve Smith also captaining in certain matches. And this was the time where both of them were captaining together. And 2013 was the last year when Rahul Dravid captained, I feel, when we Correct. made the qualifiers and the final in Champions Trophy. And then after the ban, I think Jaydeep will continue, right? Yes, Jaydeep, go on with after the ban. 2018, who was it? इन 2018 अनफॉर्चुनेटली स्टीव स्मिथ को कैप्टन बनना था टीम का, बट अनफॉर्चुनेटली वो कैप्टन बन नहीं पाए, और अजिंक्य रहाणे के साथ हमने कंटिन्यू किया, काफी अच्छी कैप्टनसी हमको देखने को मिली। 2019 में इनिशियली आई गेस अजिंक्य रहाणे वाज द कैप्टन, बट बीच में कैप्टनसी स्प्लिट हो गया था, जहां स्टीव स्मिथ को कैप्टन बनाया गया था। उसके बाद 2020 अगेन स्टीव स्मिथ वाज द कैप्टन। 2021 में संजू सैमसन को कैप्टन अनाउंस किया गया था। देन 2022, 2023 एंड 2024 भी संजू सैमसन है, और एक्सपेक्टेशन यही है कि अच्छा परफॉर्म करते रहे संजू सैमसन, बोथ विद बैट एंड विद कैप्टनसी, और टीम को जिताते रहे। Bilkul. So both of you were spot on with all of them, multiple captains, and you guys were right. Apart from the first year, I think 2022 was the closest you guys went, which was the final against Gujarat Titans. So, do you have expectations that RR can reach the qualifiers this time as well, Jaydeep? Definitely, with the squad that we have, definitely I do have the expectations कि अच्छा परफॉर्म करे। Yeah, definitely. I think I'm expecting the team to qualify for the playoffs because with the squad that we have, जैसे जयदीप भाई ने कहा, it would be a massive disappointment if RR once again failed to qualify. This would have been the same answer for me last year also. Yeah. But this year, I'm expecting us to qualify because otherwise, it is going to be a very, very disappointing season. So top two is my aim, but qualification के अलावा I don't have any other expectations. Okay, and like I can sum it up, the 16 years which Rajasthan Royals had, rather 14 years, they had a pretty good season with multiple captains, as you both mentioned. But apart from the first season, I remember the last two seasons. Yes, last season as well, they played incredibly well. But yes, they couldn't qualify because of few games. And then this year as well, they're pretty much confident. I think they can give it a shot in the qualifiers because, as Sanchit mentioned before, if qualifiers you're there, you have two bites in the cherry, and I think that you can pretty much sum it up this season as well. Here is my predicted playing 11 for the Rajasthan Royals, which is Yashasvi Jaiswal, Josh Butler as the openers, Sanju Samson, Riyan Parag, Shimron Hetmai, Dhruv Jurel. You have Ravichandran Ashwin as the spinning all-rounder. You have Prasidh Krishna, Trent Bolt, Avesh Khan, and Yuzvendra Chahal, with Rovman Powell as my impact player. So as you have three overseas, Rovman Powell can be the fourth impact player as an overseas. I'll start with Sanchit first. Pretty much, what do you have? Any other differences you can have in your opinions?
Yeah, the similar combination I'll go with. The players will keep interchanging, especially Robman Powell and Shimron Hetmyer wala factor hai. And it's a very good point that you made, Robman Powell being an impact player. Because I personally would also have someone like a Shimron Hetmyer starting ahead because of the experience that he's had Yep, with Rajasthan. And also, you mentioning the fact he only lefty apart from Yash correct. as well in the middle order. So that helps tackling the spinners. And he's a good player of spin. So that is an added advantage. With the bowling, I think there will be a lot of changes depending on the form and the combinations that we go in with. So for the first time, I feel that Prasidh Krishna might not play all the 14 games because of the quality of options that we have in the fast bowling department. And after the injury, Prasidh hasn't been himself due to rustiness. And Abhi just recently, Ranji Trophy, maybe he got a little bit of an injury, not so serious. So depending on his form, depending on everything, Prasidh can be altered with someone like a Sandeep Sharma for that matter, who has done well for RR in depth. Yes, Bilkul. barring the SRH game, but still he's been a quality option to have with his experience. And apart from that, we have Nandre Burger too as an impact player option. So depending whether we are batting On the first or situation. bowling first and conditions, Burger or Zampa can be other options to explore as impact player. So same combinations, but थोड़ा सा मतलब twist ला सकते हैं अगर कुछ Absolutely. conditions के ऊपर. So it depends on the conditions, depends on whether you bat first or bowl first. Jaideep, to you as well, you have been pretty much sticking to having both the West Indians in the middle order. So I think you will go for it, four overseas in this directly starting lineup. Give your opinions for this one. Yeah, pretty much agreed with this playing 11 and also with what Sanjit bhai just mentioned. Uh, चार ओवरसीज के साथ स्टार्ट करने का ही प्लान है वैसे तो मेरा कि शिमरन हेटमायर, जॉस बटलर, रोबन पॉवल और ट्रेंट बोल्ट आपको वहां पर नजर आएंगे. बट इट्स ऑल अपॉन द सिचुएशन क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आ चुका है तो आपको यहाँ पर प्लेयर्स को चेंज करने का, प्लेयर्स को अंदर बाहर करने का मौका मिल जाता है. तो ये एक बहुत फेवरेबल फैक्टर है खास करके राजस्थान रॉयल्स जैसी टीम के लिए जिनके पास शायद उतने ऑलराउंडर्स नहीं है लेकिन हर रोल पे फिट करने वाले प्लेयर्स जरूर है. तो अगर आप एक स्पिनिंग ट्रैक पे खेल रहे हैं तो आप तीन ओवरसीज के साथ शुरुआत कर सकते हैं और बाद में आप एडम जैम्पा को लेके आ सकते हैं टीम में. अगर स्विंग ज्यादा है तो इम्पैक्ट प्लेयर में आपको संदीप शर्मा नजर आ सकते हैं. अगर आप प्रसिद्ध आवेश और ट्रेंट बोल्ट के साथ स्टार्ट करते हैं एज एज योर थ्री फास्ट बॉलर्स. ओवरऑल जो ये प्लेइंग 11 है यही कुछ 12-13 प्लेयर्स से ही बनने वाला है. ये प्लेइंग 11 कंडीशंस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से प्लेयर्स शायद चेंज हो जाए बट ये 12-13 प्लेयर्स का जो ग्रुप है यही प्लेइंग 11 बनाएगा. ज्यादा इसमें आपको जो बैकअप्स हैं वो इस प्लेइंग 11 में आपको देखने को मिलने वाले. Bilkul. But I would differ one thing from this one. You said 12, 13 players, but like Sanchit mentioned ahead before in the show as well, that last season's ka mistake tha ki we had a thin squad. This time you have gone with a broader squad, so you have so many options to pick. So that's a good problem to have, I must tell you. But yes, this is a summit of the playing 11 for Rajasthan Royal. I think it's a very good team on paper. So many bowling options. You can have a Riyan Parag who can roll his arm over as well, being the sixth bowler if you're bowling first. So pretty much a good squad. And that concludes the show. Thank you so much to both of you. Thank you, Jaideep. Thank you, Sanchit. It was a wonderful having both of you. You guys were superb as always. Part of the Rajasthan Royals. Thank you to all the viewers as well who has been watching this show. Rajasthan Royal that we have started with number one for the Tata IPL 2024. We are done. Still have 9 teams to go. Till then, thank you so much, everyone. Don't forget to subscribe to the fifth umpire as well. Until then, thank you so much and bye bye. Thank you.